when you distribute the current which is reaching at C junction I1 को जब आप distribute करोगे IG goes along CD. Let us suppose I1 minus IG will go along CB. ठीक है बच्चे. Now at the point D again apply the junction rule. यहाँ से आपके पास आएगा I minus I1. From the branch CD it is IG which is coming. So it is I minus I1 plus IG. So I minus I1 plus IG और यहाँ से I1 minus IG will again make it I. So the battery के positive terminal has given out I current and the same I current reaches back the negative terminal of the battery. See बच्चे current distribution कुछ भी नहीं है. I current at A, I1 along PC, I minus I1 along AD. Fine. AC के along I1, AD के along I minus I1. On reaching C, I1 had again two paths to go. IG goes along CD. I1 minus IG goes along CB. So C से D IG करंट आ रहा है. A to D I minus I1 आ रहा है. जब यहाँ पे आप जंक्शन रूल अप्लाई करोगे तो it is I minus I1 plus IG and the net current comes out to be I. Now you have to derive this condition using the Kirchhoffs. So you can take any loop. अब हमारे पास तीन वेरिएबल हैं I, I1, IG and you should have basically the three loops आपको लेने पड़ेंगे to make the इक्वेशन. तो बच्चे आप कौन कौन से लूप ले सकते हो. अब हमारे पास फर्स्ट लॉ लगा के हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दी. सेकंड लॉ लगा के हम जो है केवीएल लगाएंगे, साइन कन्वेंशन लगा के लूप रूल लगाएंगे. कोई भी दो लूप्स एंड वी हैव टू टेक द लूप्स इन सच अ वे दैट द होल सर्किट इज कवर्ड एट लीस्ट वंस. सो नाउ माय पर्पस इज नॉट टू फाइंड द करंट इन दिस केस. माय पर्पस इज टू फाइंड द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. It means when IG is equal to 0, what is the condition? I will put IG is equal to 0 and I derive the condition. तो आप एक लूप ले लीजिए बच्चे. फर्स्ट लूप यू कैन टेक A to C to D to A. Fine. A to C you are traveling in the direction of current, so positive sign PI1. C to D you are traveling in the direction of current. IG is the very current. This I1 minus IG may create confusion. So IG is a current, G is a resistance. आप जब इधर से travel कर रहे हो तो आप current की direction में आ रहे हो. So this is IG into G. And when you travel D2, I told you in the last video also, कभी भी एक equation में आपको सारी positive या सारी negative terms नहीं मिलेंगी. At least one of them will be of opposite sign. So D2 है जब आप travel कर रहे हैं, so you are going in the direction opposite to the direction of current. So I minus I1 current. And R is a resistance, so with a negative sign, this comes out to be equal to 0. Fine. Now next loop you can take C to B to D to C. बच्चे आपकी चॉइस है, आप CD BC कर लो, चाहे आप CB DC कर लो. कुछ पार्ट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल होगा, कुछ आपका नेगेटिव में. So it is C to B to D to C. When you go from C to B, the current is I1 minus IG. You are traveling in the direction of current. Resistance is Q. You are going from B to D. You are traveling opposite to the direction of current. The value of current is I minus I1 plus IG with a negative sign and S. And when you go from D to C, C to B आप current की direction में आए, B to D आप current के opposite direction में जा रहे हैं. So negative sign. D to C again you are going in the opposite direction of the current, so again negative sign, so it is minus IG into G is equal to 0. So these are the two conditions. I have to derive the condition of the balanced Wheatstone bridge, which means when the IG is 0, at what condition will IG be equal to 0? So it means I substitute IG is equal to 0 in these two equations, and if I put IG is equal to 0, then this becomes I1P is equal to R into I minus I1. You transpose this term over to that time, to that side, and IG को 0 put कर दो. Second equation में ये आपकी first equation reduce हो गई. In the second equation, if you put IG 0, this becomes I1 into Q is equal to, अगर आप यहाँ पे G put करते हैं 0, so this becomes equal to S into I minus I1 and this will reduce to 0. आप IG को 0 put कर देंगे, ये IgG खत्म हो जाएगा, ये IgG खत्म हो जाएगा, यहाँ IG 0 हो गया I1 into Q,
यहाँ आई जी 0 हो गया तो I minus I1 into S with a negative sign and I transpose it to the other side. So these are the two equations that you get. Now you divide these two equations. What do you get? I1 gets cancelled. I minus I1 gets cancelled, and you get the required condition that P upon Q is equal to R upon S when Ig is equal to 0. So this is the condition of balanced Wheatstone bridge, and as I explained you why it comes out to be 0, because C and D are at the same potential. Because जब आपका battery potential distribute करेगा along this and along this, the ratio of potential drop across P is to Q will be same as R is to S. यानी P और R के across same potential difference है और Q और S के across same potential difference है. As a result of it, C और D आपके same potential पे आ जाएंगे. Fine. I hope this equation is clear. इसमें कोई भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. द ओनली थिंग यू नीड टू बी केयरफुल इज अबाउट द जंक्शन रूल. समटाइम्स जो करंट लिखा हुआ है और जो हम ऐड कर देते हैं उसमें हम कुछ गलती कर देते हैं. सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज in the questions that you can do orally also, in the MCQs also, if P, Q, R, S, they all are identical, then this Wheatstone bridge is very simple. R, 2R, R, 2R, ये आपका रोल खत्म हो गया इस रेजिस्टेंस का, which means this is the parallel branch of two resistances 2R and 2R. PBRO, QBR, RS. If P is equal to Q is equal to R is equal to S is equal to say small r. If all are identical, all are 5 ohm, all are 10 ohm, all are 2 ohm, anything. So then two identical resistance in series 2R, two identical resistance in series 2R. Shall I rub this? I hope you have noted down. In that case, you have a parallel branch of 2R and 2R and two identical resistor in parallel. The result is half of each. यानी 2R और 2R अगर आपके पास पैरेलल में है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? R. It means the net resistance of this bridge comes out to be R. तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. अगर Wheatstone bridge की सारी resistances identical हैं, then the result will also be equal to each of them. Means if all the 5 resistance is 5 की तो हमें 5th की तो जरूरत ही नहीं है. 5th चाहे आप 20 ओम लगा लो चाहे 1000 ओम लगा लो, बिकॉज उसका कोई रोल ही नहीं आ रहा है. PQRS अगर आपके पास 10 ओम है तो नेट विल बी 10 ओम. PQRS अगर आपके पास 5 ओम है तो नेट विल बी 5 ओम and so on. So based on this we have two numericals over here. Second part of the question, you can see this second part in this triangle. Can we please zoom it? You can see it. See बच्चे, A और B के बीच में अगर आप बैटरी लगाते हैं then what happens? इस R को अगर आप जो नीचे एक सिंगल R लगा हुआ है अगर आप इसको भूल जाएं, so then you can see this whole triangle above this is another Wheatstone bridge. ACDB is a Wheatstone bridge. RR और CD ब्रांच वाले R का रोल क्या हो जाएगा? खत्म. So this R and this R, this upon this should be equal to this upon this. देखिए बच्चे, जो बैटरी लगी हुई है ये इस ब्रांच को अगर आप छोड़ दें, so this is a balanced Wheatstone bridge. P upon Q is equal to R upon S. R upon R, R upon R. Potential drop across AC is the same as that of AD. Potential drop across CB is same as that of DB. तो यानी C और D का पोटेंशियल क्या होगा? सेम. So role of this R can be neglected. इस R का रोल खत्म हो गया. तो ये मेरे पास एक ऊपर जो एक Wheatstone bridge बन गया वो बन गया RR, then RR and then एक सिंगल R जो ये हमारा A, इसको कुछ लेबल कर लो, A E F B ब्रांच जो मेरी है A E F and B. So ये ब्रांच मेरी R थी. So now you see इन चारों का नेट रिजल्ट R ही है बेटा. ये ओरल हो जाएगा क्वेश्चन. दिस इज अ Wheatstone ब्रिज. इस पूरे का रिजल्टेंट आपके पास क्या आ गया? R. इस पूरे का रिजल्टेंट क्या है? R. This R and this R again they are in parallel. So the result will be R by 2. Two identical resistance in parallel. The result is half of that. Otherwise आप देख लो 2R, 2R और R. अगर आप अपने हिसाब से करना चाहें तो 2R, 2R और R. Then these are the three branches again in parallel. You can find out simple parallel combination of resistances. Otherwise I will do it. ये एक Wheatstone bridge हो गया. इसका इक्विवेलेंट R हो जाएगा. अगर Wheatstone bridge की चारों रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S आइडेंटिकल हैं तो रिजल्ट इज R ओनली. तो R and R, R by 2. So इसका नेट आंसर हो गया आपका R by 2.
यू कैन सी द थर्ड वन. अगर आप थर्ड को देखते हैं तो ये आपका आई लेबल द जंक्शन COD. तो आपके पास जो ऊपर वाला ब्रांच है EFGH, you cut the circuit into two equal halves like this. You can see ECOF, it is a one Wheatstone bridge. ECOF एक Wheatstone bridge आ रहा है आपका. GOHD is another Wheatstone bridge. I can again draw it if there is some confusion over here. So we are very clear with the Wheatstone bridge condition. I don't know whether you took the screenshot or not, but I have just rubbed it without asking you. So now this is something like this. And in each branch there is a resistor except this two. ये दोनों आपकी conducting wires हैं. These are the 2 points A and B. Now in each branch there is a resistance of R ohm. अब आप देखिए बच्चे, these are two equivalent Wheatstone bridges connected in parallel. So the resultant is R by 2. ओरल क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं. अगर आप इस सर्किट को इस O पॉइंट से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें, so the labeling that I have done is ECOF. So you look at this network GDH. So अगर आप इस ऊपर वाले हाफ को देखते हैं, so when the current will reach at this point, आपकी बैटरी और B के बीच में कनेक्टेड होगी. जितना करंट आपके पास बैटरी देगी that will reach at this point, but this is a conducting, so potential इन सब पॉइंट्स की क्या है, सेम. so ये ब्रिज भी A और B के बीच में, यहाँ से यहाँ पे A और E प्रैक्टिकली सेम पोटेंशियल पे, यहाँ जाके अगेन द करंट विल हैव टू पाथ्स टू गो. सो सम गोज अलोंग EC, सम गोज अलोंग EO, जो अगेन जो CO में मतलब EC में जाएगा, अगेन इट विल हैव टू ब्रांचेस. बट आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे दिखना चाहिए कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप EC के क्रॉस है उतना ही EO के क्रॉस होगा. जितना पोटेंशियल ड्रॉप CF के क्रॉस है, द सेम विल बी अक्रॉस OF. सो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस EC and across CF, the ratio of this is the same as that of ratio of EO and EF. Actually VEC is equal to VEO and VCF is equal to VOF. VEC is equal to VEO and VCF is equal to VOF. Fine. So जितना ड्रॉप इसका है, दिस मीन्स जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस आया उतना ही इसके क्रॉस आया. सो इस C और O पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो गई, सेम. सो रोल ऑफ दिस CO ब्रांच कैन बी निग्लेक्टेड. CO कैन बी निग्लेक्टेड. ये तो अगर आपको पूरा करना पड़े CBSE के में तो यू विल हैव टू डू इट, एंड अदरवाइज आप सीधा लिख सकते हैं R upon R is equal to R upon, then you need to label these R1, R2, R3, R4. So R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. So role of R5 can be neglected. So this is one Wheatstone bridge. And then आपको ये सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा. इन CBSE आपको ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. इन MCQ you don't have to. तो ये मेरा इसका रोल खत्म हो गया. On the same grounds, I can say that the role of OD can also be neglected. In the lower half, GOHD. So you label this R1, R2, R3, R4. So R5 can be neglected. R6 upon R7 is equal to R8 upon R9. So role of R10 can be neglected. So R5 and R10 can be neglected. और इसकी आपको एग्जाम में if either you explain in terms of potential or you explain in terms of the Wheatstone bridge, that since R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, so R5 has no role to play. Similarly, if R6 upon R7 is equal to R8 upon R9, then the role of R10 can also be neglected. So this is RR, this is again RR. ये branches मेरी हो गई E, C, O, F. ये तो A ही है कॉमन पोटेंशियल पे. फाइन.
एंड नीचे वाले ब्रिज में भी हमारे पास जो आएगा कंडीशन वो यही आएगा. फ्रॉम ए आई हैव वन ब्रांच. पूरी की पूरी आपके पास सेम ही ब्रांच चल रही है बच्चे. ए इज द सेम थिंग, सबकी पोटेंशियल ए ही है. देन दिस इज A to G to D, then D to H, and A to G to O, and O to H. So this all is same potential. This is H, this is G, and they are connected at this point O. Fine. तो ये आपके पास जो है एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया बेटा, जिसका नेट रेजिस्टेंस क्या है R. और ये आपके पास दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया जिसका नेट रेजिस्टेंस क्या है R. सो these are the two R. इस पूरे का इक्विवेलेंट R हो गया, इस पूरे का इक्विवेलेंट R हो गया, एंड द रिजल्टेंट इज R by 2. ठीक है. सो दिस इज लाइक द टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल. एम आई क्लियर बेटा? ये वायर कनेक्टेड ही है आपकी. Fine. So the resultant is R by 2. This was the two application of Wheatstone bridge. You can have a number of them. Shall I wrap it? So now, what I was telling you previously, कि the net resistance of any branch जिसको हमने P लिया है, the ratio of that, I'll give you an example. Let us suppose P can be a combination of two resistances, 10 ohm, 4 ohm, 12 ohm, and I can give you the numerical like this. Find the value of X if the bridge is balanced. Something like this can also be asked. So this is CD. These are the two branches A, B. This can be say 3, 6. So ratio आपके पास if it is balanced Wheatstone bridge, तो AC branch की net resistance will be considered 12 और 4 अलग अलग नहीं लिए जाएंगे. The whole resistance of this branch is 16 ohm divided by X should be equal to, say this is 3 and 6. The whole resistance of AD branch will be equal to how much? 3 into 6 divided by 3 plus 6 comes out to be 2 ohm. So if this is 2, then this can be what? If it is a balanced Wheatstone bridge, then 16 upon X. हमें X की value निकालनी है. If we know this value, say anything, I don't remember the exact value in this question. Or you can have this as, this can also be the series branch 1 and 3, something like this. So this can be 4. And now you can find the value of X. The question says, find the value of X if this bridge is balanced. If we have to do the question like this, then again it is Wheatstone bridge. अगर bridge balance है तो इसका कोई role नहीं है. CG can be neglected. So the net resistance of AC is considered as P. The net resistance of CG is considered as Q. So P upon Q is equal to R upon S. So what I was trying to tell you कि अगर आपके पास single resistor नहीं है और कोई उसका series या parallel combination है, तो बच्चे आपको उन resistances का net resistance इस पूरी branch का लेना है. So 12 plus 4 by X should be 6 into 3 by 6 plus 3 by 1 plus 3. Am I clear? So पूरी branch की resistance RAC upon RCB should be equal to RAD upon RDB. ठीक है बच्चे? Am I clear? So now we come to the next question. बच्चे अभी आप इस वीडियो में Wheatstone bridge का ही करते हैं. In the next video, immediately after this, I'll make, and the two networks that I have drawn first and fourth, we will solve these two networks in the next video. Thank you. If you like the video, kindly press the like button and also subscribe our channel, UWin Academy, where we keep on providing you the most study material.